Yes. Okay, Yeah. everything is good. Okay, so बताओ कैसे चल रहा है प्रैक्टिस सेशन 1 के प्रॉब्लम्स की. So far, I finished the sliding windows. I just have doubt on number 3. Okay, and what Um, about. oh, and then I did watch the videos and I implemented the binary search. Like, I implemented like how they did the binary search. Okay, That's pretty much it. Oh, and then I also finished one problem for hashing, but I wasn't able to do the rest of them. I finished sliding window though. yeah. Is my screen visible? Yes. Yeah. Mm, so basically number 3. Okay, okay. Is that the long? Okay, cool. Number 3 is kind of new in concept, ठीक है. Then fourth, Yeah. fifth, fourth तो हो गया होगा. Fourth we have done in the How? class. Yeah, fourth hoga. And fifth And How? fifth, I'm working on. or sixth. And I think me and Arahi both had questions on number 6. Yeah, I don't understand. Okay, Yeah. तो ठीक है. I'm working on five though. Okay, so what I we can finished do 5 and yeah. is we can have these doubts after the end of the session, you know. Okay. Yeah. Of course. Okay, and tell me one thing, कि both of you watched those 2 videos, right? Yes, I did. Okay, cool. Yes. Okay. So let's start today's session. Okay. Um, okay. Okay, cool. So today we are actually doing week 2, day 1. Yeah. Right. It is technically session 3. So today we will be discussing about binary search. Yeah. So so far we have discussed about a lot of tools, right? Prefix Yeah. arrays, difference arrays, then sliding window, 2 pointers, a Yeah. lot of things, hashing, mashing. Huh. Now let's discuss some more things, some more algorithm, you can say. Binary search is kind of a technique or algorithm. So before starting binary search, first let's focus on this term, which is search, right? Let's focus Yeah. on searching. So searching का मतलब क्या हुआ? Searching as usual, what it means कि to find out something, right? Find out or Yeah. to search for something. Basically, that's what you need to do. कि, for example, given an array. Okay. So given an array, let's say कि we have a random array, let's say unsorted array, ठीक है? 1, 8, 0, 2, 5, 8, 2, let's say मतलब ऐसा कुछ है 3 members का. And searching का जो problem होगा वो क्या होगा कि given an array of size n, you need and given an integer x, you need to tell me whether this x exists in the array or not, right? Basically, the question is tell me whether x, or let's say x is 3. So tell me whether x exists in the array or not. Right? This is the problem. This is actually a searching problem because you need to search this element into this array, right? You need to search Yeah, that. correct. So basically, if we have an unsorted array, right? Let's say कि this array is unsorted, doesn't have any patterns, doesn't have anything. This is just random array. So how can we solve this problem? You tell me whether x exists or not in this array. So you just have to go through each You go element. to the array and you see like if array at I is equal to Yeah. x. Correct. There is. But that will be like linear search. Correct. That's good. Yeah. So basically, there is only one way to do this, right? Because since Yeah. the array doesn't have any patterns, we cannot apply any. मतलब हम कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकते. We cannot apply anything smart, right? Since array is unsorted, array is random, we cannot apply anything smart.
So the best thing to do in this case is just one by one search for each element whether it is equal to 3 or not. If it is equal to 3, just print yes, we found out 3. Else, after searching the entire array, just say no, we didn't find 3, right? Yeah. Correct. So basically this is what we call linear search, है ना? Linear search मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, just start from 0th index, or you can start from left, keep iterating over the array until you find the element. This is what we call linear search, correct? So tell me one thing, Yes. what is the time complexity of linear search? O of n. O of the n if n. Yeah, time complexity will be big O of n, because you need to, in worst case, you need to search for all the elements, है ना? For example, अगर x 3 है, तो सारे elements को एक एक बार iterate करना पड़ जाएगा, right? If we start from left. So basically, how many operations are we doing? In worst case, order of n. Yeah. N, yeah. Correct. Now let's talk about different scenarios. So basically, searching जो होता है वो kind of two type का होता है. First is linear search, जो तुम्हें पता ही है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा लेफ्ट से स्टार्ट करके वन बाय वन आइटरेट करते जाओ. Second thing is binary search. Now this binary search thing is useful when your array is having some kind of pattern. For example, it is sorted. Okay. If the array is sorted, we know some things, some information about array, right? It will follow a certain pattern. And it is sorted. So let's say it is sorted based on ascending order, let's say, or increasing order, or non-decreasing order, जो भी है. The thing is, we can actually do something smart here. Let's see how. Okay. So basically, let's say we have now a sorted array. Okay. So for example, 1, let's say -4, negative values भी हैं. -1, 0, 3, 5, 8, 10, 13, 17 ऐसा करके, ठीक है? This is array. 0th guy, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. Let's add one more. So let's say -8. No, let's not add here. Let's add here. 9. So we have actually 10 elements, right? अब देखो binary search काम कैसे करता है. Actually, you have watched the video, right? So I assume कि थोड़ा बहुत idea तो हो गया होगा. Yeah, we do. Yeah. Okay. फिर भी एक बार देख लेते हैं, just for clarity. Yeah. अभी basically this array is sorted, right? This is sorted based on increasing value. मतलब based on increasing order में sorted है. Let's say this can also have some duplicates as well. मतलब so it is not necessarily increasing. You can say it is non-decreasing, right? You can say this array is non-decreasing. It means कि कभी decrease नहीं होगा. I know कि कभी ऐसा भी है कि increase भी नहीं हो रहा है. As you can see here, increase नहीं हो रहा है ना, same value. That's why we call it non-decreasing. We don't call it increasing, ठीक है? Because increasing का मतलब क्या हुआ कि every time it is increasing. But as you can see here, it is not increasing. It is stable. So that's why we call it non-decreasing. It means it will not decrease, ठीक है? It might increase, might not increase, but it will not decrease for sure. That's why it is non-decreasing array. Got the point? Yes. Okay. Yeah. Now let's say you have the problem is exactly same. You have an array of size n and given a value x. Let's say value x is 8, okay, or let's say the value is 13, okay. You need to find this 13 in this array. You need to tell me what is the position of 13. If it exists, tell me the position. If it doesn't exist, just return -1, right? Yeah. That's the problem. So now let's see basically what is the main concept of binary search. Binary search का main concept क्या होता है? We first start with a range, ठीक है? So a range is, so basically how to define a range? Range is nothing but we first start with any range, मतलब with a range. So range को कैसे define कर सकते हैं हम? Any idea? Range is nothing but sub array. Yeah. Right? And we can actually denote a range using two numbers or two positions, which is borders, right? So left and right. Yeah. Basically this is left border, this is right border. And So right. at starting, while you are starting your binary search, your range will be the entire array, right? Because you don't know anything about Right. you don't have any information. So basically I will ask you, okay, what is your search range? So you will say my search range is entire array because I need to search this 13 in my entire array, correct? Correct. So at starting, your L will be 0 and R will be n-1. Okay? Now let's see what we actually do. So now in binary search, we find out the middle element. Okay? And to find out the position of middle element, let's say this is L and this is R. So what will be the position of this middle element? It will be L plus R by 2, right? Just the mean of these two. L plus R by 2 हो जाएगा.
And what is L plus R by 2 right now? If L is 0, R is 9, what will be mid? 4.4, 4.5. So But since we do integer division, so that's why it will be floor over value. 5. No, it will be floor value. Okay. Oh मतलब yeah, ये so हमेशा 4. याद रखना है कि जो 4. इंटीजर डिवीजन होता है प्रोग्रामिंग में, इट ऑलवेज गिव फ्लोर वैल्यू. ठीक है. Yeah. So basically if it is So 4.5, it will give you 4. 4. So I'll say okay, no worries. So now this is my middle element, right? Right. Now let's see what I'm doing, what I'm going to do. Now I'll say okay, Mm, hey middle element, are you equal to my target element? He will say no, I'm not equal to No. your target element. So I got a Right. bit sad, right? Because 13 to mila nahi. But this 5 Yeah. will say, hey, wait. I can tell you some information. The information is, since I am 5, so 5 will say, since I am less than target, can we say something? Can we draw some observation? If this middle element is less than target, and if the array is sorted, what does it actually mean? The target Then is that greater than means what's after it. One by one. Oh, so I was just saying the target will be after the 5 because it's greater than 5 and this array is sorted. Correct. Since the array is sorted and we actually have this middle element, which is 5. So 5 yeah. will say, hey, I'm not equal to a target element, but I can give you some information that will be helpful to you. Yeah. The information is, since I'm less than target, you will not find your answer in left part, in my left. You will not gonna find answer in my left part or in Right. my left, right? So 5 will say कि ये अगर मैं if I am less than 13, तो ये जो left part है ना तुम्हारे range का, it is useless for you because all of them has to be less than 13 since the array is sorted, right? 5 will actually advise me कि hey, what you can do is just change your search range to the right part. He will say please update your search range to this right region because it is useful for you. This left part is not useful for you. So 5 will say since I am actually less than target value, you should move. He will say you should move right. And moving right, what does it mean? कि अगर हम देखो ऐसे देखो कि अगर ये L है, ये R है. In this case, it was 0, it was 9, and the middle value was 4, right? अब ये मिडिल वैल्यू पे 5 खड़ा हुआ है तो 5 बोलेगा कि यार ये पूरा रीजन तो बेकार है. दिस इज जस्ट वेस्ट, राइट? यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन दिस राइट पार्ट. एंड राइट पार्ट क्या होगा? राइट पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 5 and it will be from 9. So basically 9. my R will be same, R will be exactly same, and I just need to update my L to mid plus 1, correct? This is mid, right? This is mid plus 1. So basically you should move right का मतलब होता है just update your L to mid plus 1. अरे बात समझ में? Yeah. So And now, then you find now we will just repeat this process again and again. ठीक है? तो बेसिकली अब देखो हमारा रेंज क्या हो गया. अब अगर ध्यान से देखोगे तो L ये नहीं है. अब L क्या है? It's 5. It's so 5. 8. Yeah. Right? Now I'll again ask you the same thing. The same thing is, तो अभी बेसिकली मैं यही का यही रेंज यहाँ पे बना रहा हूँ. रुको एक मिनट. Can we do something smart to make this range? ये कहाँ पे ऐड हुआ? Wait a minute. Actually मैंने कुछ सीखा था ओपन बोर्ड में. Let me apply that. Add to new page. चलो हाँ ये देखो. ठीक है. तो बेसिकली अब तुम ध्यान से देखोगे तो दिस विल बिकम माई L, राइट? एंड दिस विल बिकम माई R, है ना? प्रीवियसली देखो यही वाले अब फोकस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. दैट्स द सेम थिंग, है ना? अब मैं फिर से सेम थिंग ही करूंगा. मतलब मुझे सेम ही चीज करनी है. एवरी टाइम I'll ask the middle guy. Every time I'll calculate what is middle guy now, है ना? तो ये फर्स्ट इटरेशन था. इसमें मैंने मिडिल गाय से कुछ पूछा, राइट? आई आस्क समथिंग कि है कैन यू हेल्प मी? तो उसने बोला हाँ, since I'm less than target, you will not find anything in my left, you should move right. So moving right means L is equal to mid plus 1. अब फिर से करते हैं. L is 5, R is 9. What is the middle value? 7. 13. Oh, 7. Middle value is 7 actually, because we talk about indexes, not values, right? While deciding range. तो अभी ऐसा मान लो ना कि जो x है ना वो 17 है मान लो. ठीक है. 13 मत मानो क्योंकि अभी 13 तो मिल ही जाएगा वरना.
मैं तुम्हें जो Yeah. बताना चाहता हूँ वो एक्चुअली मैं 17 के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से x is 17. So now what is middle value? Middle value is this guy, right? Yeah. Yeah. Now I'll ask 13. Hey, middle guy, are you equal to my target value? He'll say no. I'm not equal to your target value, but I can tell you something. अरे यार अभी 13 भी मत मानो, क्योंकि फिर मूव राइट, मतलब अभी हम लोग मूव राइट कर चुके हैं ना एक बार। तुम एक काम करो, जस्ट वेट अ मिनट, तुम एक काम करो, x को 8 मानो, सॉरी आई एक्चुअली वांट टू टेल यू समथिंग, x को 8 मान के करो, ठीक है। हाँ. देखो इफ x is 8, तो अब दिस इज द मिडिल गाय। I'll ask 13, hey, are you equal to my target value? He will say, no, I'm not equal to your target value, but I can give you some information. The information is, 13 will say, since I am greater than target, what does it actually mean? Agar ye Then you 13, go left. correct, because there is no point in moving right, because all of them has to be greater than target, right? So ye Yeah. bolega, you should move left. And moving left का क्या मतलब होता है कि अगर ये L है, Meaning, ये R है, ये mid है, तो moving left means we should focus on this region now. yeah. इसके लेफ्ट का रीजन, राइट, दैट इज इनसाइड माय रेंज। so if this was my range, this is the middle element, moving left means कि I should just change my R to mid minus 1, Middle minus 1. right? That's what it means. Yeah. Moving left means R is equal to mid minus 1. अभी ये बताओ मेरा अपडेटेड रेंज क्या हो जाएगा? मेरा अपडेटेड रेंज इतना हो जाएगा, राइट? Maybe 5, 7. 5 और 6, दैट्स इट। 7 नहीं 5, आएगा, 6. 7 इज ऑल्सो वेस्ट। 6, 7 minus 1, yeah. तो अब मेरा अपडेटेड रेंज ये हो गया कि 8 is the value and 5 6 is the index and this is my L, this is my R, right? Now I'll again do the same thing, again find out what is middle element. Middle element क्या हो गया? 5. 5. And you got So 5. 8 will say, hey, I am equal to your middle element, so I got my my target value, I can just directly terminate from here, Yeah. correct? Because I got the No. answer, right? Correct. Yeah. तो बेसिकली बाइनरी सर्च समझ में आया क्या होता है? हाँ. और बेसिकली हम स्मार्ट मतलब क्यों मूव कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मिडिल गए, सिंस द एरे सॉर्टेड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, है ना? That's बिकॉज only, yes. हाँ, बिकॉज द एरे इज फॉलोइंग सम पैटर्न, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सम एडवांटेज, वी आर टेकिंग द एडवांटेज कि वी ऑलवेज आस्क द मिडिल गाय कि Yeah. बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मिडिल गाय वी डिसाइड वेदर टू मूव लेफ्ट और वेदर टू मूव राइट, राइट, वेदर टू मूव लेफ्ट और वेदर टू मूव Correct. राइट। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ इट? तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, व्हाट इज एक्चुअली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, राइट? तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो इस प्रोसेस को। पहले हमारा रेंज क्या था, ये फुल एरे थी, राइट? पहले हमारा Yeah. रेंज का साइज क्या था, n, मान लो ये Yeah. रेंज साइज लिख रहा हूँ मैं। एट फर्स्ट आइट्रेशन माई रेंज साइज वॉज फुल एरे। आफ्टर Yeah. फर्स्ट आइट्रेशन, जस्ट फर्स्ट आइट्रेशन, मैंने क्या डिसाइड किया कि आई शुड मूव राइट। व्हाट Yeah. इट एक्चुअली Yeah. मीन्स कि मैंने ये जो रेंज है उसको हाफ में डिवाइड कर लिया, राइट? बिकॉज दिस इज द हाफ पार्ट and I got to know कि this half part is actually useless for me and only this much part is useful for me, right? So basically Right. after first iteration my range size become n by 2, अरे बात समझ में? Yeah. And then after second iteration मैंने फिर से इसमें भी सेम ही चीज़ की, मिडिल फाइंड आउट किया, फिर वेदर डिसाइड किया वेदर टू मूव लेफ्ट और राइट। इट एक्चुअली मीन्स कि एवरी टाइम एट ईच iteration आई एम डिवाइडिंग माई रेंज साइज बाय हाफ, इजंट इट? Yeah. Yeah. तो बेसिकली देखो फर्स्ट, देखो क्या होगा, पहले साइज क्या था, 10 था, राइट? पहले साइज हाँ. 10 था, फिर लेट्स से Yeah. 5 हो गया, एज यू कैन सी 5 1 2 3 4 5 हो गया रेंज साइज। उसके बाद फिर 2 हो गया, एज यू कैन सी हियर रेंज साइज 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 पे तो हमको मिल गया था, वी गॉट आवर टारगेट वैल्यू, दैट्स व्हाई वी टर्मिनेटेड। बट अगर हमें नहीं मिलता तो हम क्या करते? मान लो कि टारगेट वैल्यू 9 होता, मान लो इन दिस केस, तो क्या होता? वी फर्स्ट फाइंड आउट द मिडिल गाय, राइट? अब मिडिल गाय क्या है, 8 है। 8 विल सजेस्ट मी टू मूव लेफ्ट और राइट, क्या सजेस्ट करेगा? Right. करेक्ट, 8 विल से यू शुड मूव राइट। तो अब इसके आगे जब प्रोसेस होता तो क्या होता, मेरा रेंज क्या बन जाता, सिर्फ सिंगल एलिमेंट, राइट? यही वाला, समझ आ रही है ना थोड़ी थोड़ी बात? इट विल बी एल एंड आर सेम। अब उसके बाद मेरे पास सिर्फ एल और आर एक ही एलिमेंट बचा है, व्हाट विल बी द मिडिल एलिमेंट, द सेम एलिमेंट, क्योंकि 6 + 6 / 2 6 ही होता है। हाँ. एंड अब देखो क्या होगा, जब यहाँ पे मेरे पास ये रेंज बची, तो मैंने अगेन सेम थिंग पूछा कि मिडिल एलिमेंट क्या मेरे को एडवाइस करेगा, आई शुड मूव व्हाट,
अभी तो रेंज इतना ही है, बट स्टिल ही विल से ना कि यू शुड मूव राइट। मुझे पता है राइट में कुछ नहीं है, बट स्टिल वो तो Yeah, यही बोलेगा ना, मूव राइट। yeah, मूविंग राइट का क्या मतलब होता है, एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन, राइट। Yeah. तो नेक्स्ट yeah, आइट्रेशन में क्या होगा, एल विल बिकम 6 + 1 विच इज 7, and r will be same which is 6, and here you Yeah. should stop. Why you should stop? Because this is not a valid range. For a valid range, L should be less than equal to R, Yeah. right? और and you can also visualize from here only कि देखो सिंगल एलिमेंट बचा था, when सिंगल हाँ, एलिमेंट बचा है, अब ये सिंगल एलिमेंट बोल रहा है कि राइट मूव करो, तो राइट में तो कुछ है ही नहीं ना, देयर इज नथिंग इन राइट। दैट्स व्हाई ऐसा हुआ कि L becomes 7, R becomes 6। Right. So मान लो less. मान लो कि ये ऐसा बोलता कि मूव लेफ्ट, मान लो इन सम सिनेरियो ये ऐसा भी बोलता मूव लेफ्ट, तो उसमें क्या होता, एल तुम्हारा 6 रह जाता और आर मिड -1 हो जाता, राइट। Yeah. आर मिड हाँ, -1 हो जाता है, तो आर 5 हो जाता है। इन दिस केस ऑल्सो यू शुड स्टॉप, बाय बिकॉज एल L is बिकेम, less greater than R. हाँ एल शुड बी लेस हाँ, देन इक्वल टू आर फॉर अ वैलिड रेंज, ठीक है। yeah, तो यही चीज़ है। तो बेसिकली विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर। समझ आई बात। बेसिकली जब तक हमारी रेंज का कुछ साइज है तब तक हमें कंटिन्यू करना है, बिकॉज जब यहाँ पे गए तो रेंज साइज 0 बन गया ना, तो 0 में क्या ही सर्च होगा, देर इज नथिंग टू सर्च इन जीरो रेंज, राइट, जीरो साइज yeah, रेंज। Correct. तो बेसिकली अब ध्यान से देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बाइनरी सर्च का, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसके बाद क्या होता है, 2 के बाद लेट्स से ये 1 पे जाता है, 1 के बाद फिर 0 पे आता है, यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देते, राइट प्रोसेस। ये Right. रेंज साइज है अगर तो। yeah, अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी आइट्रेशन इन वर्स्ट केस आई विल डू, राइट, दैट्स व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, है ना। yeah, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि हाउ मेनी आइट्रेशन आई विल डू। देखो लीनियर सर्च में मैंने क्या बोलाया था कि हमें सारे एक एक करके वर्स्ट केस में चेक करना ही पड़ेगा, राइट। हाँ, मिनट, हाँ। बेसिकली लीनियर सर्च में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ n। Right. अब हाँ, बाइनरी सर्च में क्या होगा, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। तो बाइनरी सर्च में अगर हमारा साइज, और इफ द साइज ऑफ माई एरे इज n, ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सी मतलब क्या होगा। बेसिकली आई स्टार्टेड विथ रेंज साइज n, लेट्स से n is 16, मान लो। yeah, आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन व्हाट विल बी माई रेंज साइज, 8, 8, 8, देन 4, देन 2, 2, देन 1. 1, देन 0, I should stop now, है ना। How many iterations I am doing, 1 2 3 4 3, 5। 5, yeah, So basically for a general n, how many number of iterations I will be doing, N over 2. n over 2? No, no, actually देखो ध्यान से देखो, at each iteration I am keep dividing this n by 2, तो काफ़ी जल्दी डिक्रीज होगा ना ये, मतलब एवरी टाइम यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2 यू आर ब्रेकिंग इट इन हाफ। बेसिकली देखो देखो yeah, ध्यान से देखो, आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन द वैल्यू विल बिकम n by 2, राइट। yeah, After second iteration, the value will become n by 2 to the power 2, 2, है ना, So 2 2 से to तो the डिवाइड power. किया ना। Yeah. oh, Then after third iteration, it will become n by 2 to the power 3, 3. yeah, and so on. I should do this till I get 1, है ना। 1 के बाद एक बार 0 भी मिलेगा, बट आई शुड डू दिस टिल आई गेट 1, क्योंकि एक ऑपरेशन और yeah, ऐड कर लेना उसके बाद, चलो, है ना। हाँ. हाँ, तो बेसिकली लेट्स अज्यूम वी आर डूइंग k ऑपरेशंस, ठीक है। तो हाँ, k वी आर डूइंग, लेट्स अज्यूम वी आर डूइंग k ऑपरेशंस टू रीच दिस 1। तो अगर k ऑपरेशन किया है तो ये जनरल टर्म क्या बन जाएगा, n by 2 N to the over power 2 k, raised to k. and let's say if this is equal to 1, so it actually implies, And it will be log of. correct, 2 to the power k will log be of n, and if we So if we log of take log 2 on both sides, so k will become log log 2 2n. of, this is the number of operations I will be doing in the worst case, and this is what time complexity of binary search is. Yeah. It is actually logarithmic of n, Yeah. हाँ, right. Exactly. So should I implement it now, like, should I implement the binary search Yeah. right now very quickly? Yeah. Okay, you must have seen the implementation in the video itself, I guess, Yeah. है ना? But yes, let's yes, quickly implement it as well, ठीक है। yeah, So basically, if I create binary search.cpp, so abhi, let's say we have a sorted array, right? So let's say vector int v, and the same array, let's use the same array. So let's say this is the same array. Um,
Wait a minute. Yeah. So let's say this is my array -4, Mhm. minus Okay. 1, 0, 3, Yeah. 5, 8, 8, 13, 17, 20, right? Yeah. Uh, what is my size of V? It is n. Okay. Now I'll say, Hmm. okay, to start binary search, I first need to define two variables, which is L and R, right? For my Yeah. range. Yeah. L is 0, R is n minus 1. Correct? Yeah. Now I need to Correct. run a loop till my range is valid. So while L is less While than L equal is to R, Is less than R. equal I to should R. run this loop, right? अब क्या Yeah. करना है देखो each iteration में हमें क्या करना होता है we first need to find out our Calculate middle value. mid, So let's which find is out L plus R L over plus 2. R by 2. Divided by 2. Now I need to take some decisions, right? I need So That's if to take some if decisions. so first you have to check if like It's the equal to the value mid is equal to value. the middle. Correct. So So if basically, let's also create a variable which is answer. Initialize with default value -1. This answer is nothing but it will actually handle. मतलब ये answer कुछ नहीं है वो position ही है, right? The right, position that we need to return or we need to Uh, print. So now I need to ask if V of v of mid is equal to actually mid. equal to my x, so I need to take X, x also as input, but for Yeah. time being, let's call it 9 or let's call it 13, 17. चलो. If v of mid yeah, is actually equal to x, what should I do? then you just return the mid. You just हाँ, return it. देर इज नो नीड टू रिटर्न इट बेसिकली, मतलब यहाँ पे अभी ब्रेक कर सकते हैं ना, आंसर में मिड डाल दो Yeah, और ब्रेक कर दो. yeah, yeah. Oh yeah. इफ v ऑफ मिड इज ग्रेटर देन x, व्हाट आई शुड डू? Then the right value will be mid minus. Yeah. हाँ, तो बेसिकली ये वाला सिनेरियो है कि as you can see Yeah. this So right will since be mid minus 1. since I'm greater than target, you should move Target. left, है ना? I should Yeah. move Yeah. left. So moving left means r is equal to mid minus 1. Right and yeah. So moving left, r will be mid minus 1. Else, Yeah. if it is Else is less than, then L is equal to. right. And L is mid plus 1. That's it, Yes. correct. Plus And one. at last, I should just print the answer, right? Yeah. Yeah. So let's see if it works. For 17, so for 17, what I should get? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, let's run. Right. I'm getting 8. Okay, for Yeah. example, let's say if I set this value to 9, which doesn't even exist in the array. So let's see what I'm getting. -1. Negative 1. Negative Yeah. 1. Why -1? Because we will not hit this condition, right? Will Yeah. not hit this condition, and from this L less than equal to R, मतलब ये condition valid नहीं रह जाएगी. मतलब क्या होगा? Yeah. Your That's range size will become 0 at one point and your L will become greater than R. So this loop will terminate. ठीक है? correct. And then this that जो default value है -1 वही की वही print हो जाएगी. Got the point? Yeah. But That's how binary search works. Correct? Yeah. Now, correct. if I compare this binary search with your linear search, कि वही मतलब सेम चीज़ कि अगर sorted array दिया हुआ है ना, तो हाँ. and if somebody asks you to search for a value, so what should you apply? Linear search or binary search? For sorted array, binary search. Binary search. Correct. Can we apply linear search as well in sorted array? Yeah. We can. We Yeah. can, right? But Correct. But it will let's take say, a lot. it will take a lot of time. Correct. So basically, let's say But if the size of your array is 10 to the power 5, okay, and let's say the array is sorted. So to search for a value in this array, what is the worst case comparisons or operations you will be doing while performing linear search? 10 to the 10 to the power 5. Correct. Then Correct. 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 But while doing binary search, how many operations you will be doing? Worst case? log of 10 to the Correct. Log of 10 to the power 5, which is how much? 5 into log 5 times 10. log 2 of Log 2 of 10 is around 3.3 something. 2. So it is around 17. ठीक है. 5 into Yeah. 3.3 something 17 मान लो. Something. And it Yeah. is 10 to the power 5. Are you able to see the huge difference between Yeah. these two values? yeah. Yeah. Just Yeah. give me a minute. Huh? Yeah. Definitely. Yeah. Yeah, I'm back. Huh.
बेसिकली आर यू एबल टू सी द ह्यूज डिफरेंस? देखो एक तरफ 10 to the power Yeah. 5 है एंड एक तरफ ओनली 17 है, राइट? हाँ. दिस इज दैट मच फास्ट, बाइनरी सर्च इज दैट मच फास्ट, राइट? और इन Correct. कंपैरिजन विद, मतलब बेसिकली वी आर कंपेयरिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हियर, ऑर्डर ऑफ n Yeah. वर्सेस ऑर्डर ऑफ log n। तो ये log n काफी फास्ट होता है, वेरी फास्ट इट इज, राइट? Exactly. Yeah. करेक्ट, ठीक है। सो टिल नाउ वी Mhm. गॉट एन आइडिया कि बेसिकली if we have a sorted array we can apply binary search over it, right? Yeah, correct. Basically it's not only about matlab sorted array, binary search is not only limited to sorted array, it's much more than that, that's what we will be seeing, ठीक है? तो Yeah. बेसिकली हमेशा सिर्फ बाइनरी सर्च जैसे ही आता है दिमाग में तो सॉर्टेड नहीं सोचना है। यू शुड थिंक अबाउट दिस कि व्हेन वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च। तो देखो ध्यान से देखोगे तो सॉर्टेड एरे में क्यों हम अप्लाई कर पाए? बिकॉज एट ईच आइट्रेशन वी आर एबल टू टेक द डिसीजन whether to move left or whether to move right, correct? Correct. So basically it's not only about sorted arrays, it can be about some different kind of arrays as well that I'm gonna show you. Basically the So main in unsorted arrays, we can only do linear search, right? correct, because you cannot take decision na, whether to move left or whether to move Yeah. right, That's right. Yeah. correct? Cool. So basically matlab it's not only about sorted arrays, that's what I'm gonna like that's what I'm telling you कि binary search is not only Okay. about sorted arrays. You just need to make sure in your mind कि when we can apply binary search, when you are able to take the decision, okay? Basically if somebody asks you when you can apply binary search, or if you ask yourself I can apply binary search, the answer is when you are able to take decisions Yeah. and you Correct. are able to take decision, just wait a minute, decision whether to move left or whether to move right, Right. correct? At each iteration if you are Yeah. able to do it, it doesn't matter whether the array is sorted or something else, matlab obviously of some other kind, you can apply binary search, so whether to move left Yeah. or whether to move right. But obviously in unsorted array we cannot take decision, right? क्योंकि अनसॉर्टेड एरे में Correct. कुछ भी नहीं बोल सकते ना। फॉर एग्जांपल देखो अगर कोई एग्जांपल ले हम अनसॉर्टेड एरे का, let's say here we have 5, here we have 13 and here we have 8, and here we have 9 as well. Let's say if target value is 13, so basically this is the middle guy, right? Now by looking at this, what you can say? You cannot say anything क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना Yeah. यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। Everything is Yeah. random, Correct. you cannot take decision, right? Yeah. So basically you cannot apply binary search over an unsorted array for sure. Yeah. Now let's Yeah. see one example to see कि binary search is not only limited to sorted arrays, there can be other patterns as well where you can apply binary search. The main thing should be this Yeah. only. You should ask yourself, are you able to take the decision or not? If you are able to take the decision, go ahead and apply binary search. Okay? Yeah. Let's see a problem. The problem is, okay, problem is कि given an array or given a string array Yeah. कुछ भी सब सेम ही होता है। तो Yeah. given a string, तो string का जो पैटर्न है वो ये है कि फर्स्ट देयर विल बी सम फॉल्स, ठीक है? स्ट्रिंग इज एक्चुअली यू कैन से, चलो Like what? स्ट्रिंग ये जो है ना ये बूलियन स्ट्रिंग है काइंड ऑफ, या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हो कि फॉल्स और हाँ. ट्रू वाली स्ट्रिंग है, ठीक है? सिर्फ इसमें Oh. ट्रू और फॉल्स ही होंगे। तो गिवन अ स्ट्रिंग, Hmm. द स्ट्रिंग इज हैविंग अ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज फर्स्ट देयर विल बी सम फॉल्स, ठीक है? कुछ Okay. फॉल्स होंगे, अब वो मुझे नहीं पता कितने होंगे, लाइक द फॉल्स नंबर ऑफ फॉल्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है? Okay. after you have after you have finished the false, then there will be true till the end, ठीक है? Okay. समझ आ गई Yeah. स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी? समझ आ हाँ. गया? द प्रॉपर्टी Yeah. इज फर्स्ट देयर विल बी सम फॉल्स, अब वो कितने फॉल्स हैं पता नहीं, बट ग्रेटर देन और हाँ. इक्वल टू 0 होंगे, कितने होंगे पता नहीं, लेट्स से k फॉल्स है। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी ट्रू टिल द एंड ऑफ द एरे, ठीक है? तो लेट्स से इफ द साइज इज n, तो एवरीथिंग हियर मतलब ये जो n माइनस के एलिमेंट्स बच गए वो सारे ट्रू होंगे, ठीक है? हाँ. Basically given this string, okay, you need to find the position of first true, समझ गए? Given Okay. a string of this kind, हाँ. find the position of first t, समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल हाँ. अगर ये स्ट्रिंग होती, मान लो कि स्ट्रिंग से इतनी होती, या फिर चलो लेट्स नॉट डिस्टर्ब दिस, मान लो कि स्ट्रिंग जो है वो ऐसी होती, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ये होती f f f f f then t t t
In this case, you should return 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You should return 5 because 5 is the first true position. हाँ समझ गए? okay Basically, given a string of this type, जो कि ऐसा है, ये तुम्हें string दे दी गई है. You need to tell me what is the position of first true. ठीक है? That's what I हाँ asked. तो अभी yeah ये प्रॉब्लम को ये बारे में थोड़ा सोचो. देखो ऑब्वियसली लीनियर सर्च तो हम लगा ही सकते हैं ना, कि एक एक करके स्टार्ट करेंगे, जैसे ही yeah ट्रू मिल गया वी कैन obviously ब्रेक. yeah तो ऑब्वियसली लीनियर सर्च तो सोल्यूशन है ही, बट इट इज नॉट एफिशिएंट वन. हाँ नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट अप्लाइंग बाइनरी सर्च टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है? एंड आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सॉर्टेड वॉर्टेड कुछ नहीं है. देखो सॉर्टेड एरे थोड़ी है ये. बट आई टोल्ड यू ना कि यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वेदर यू आर एबल टू टेक डिसीजन और नॉट. yeah तो नाउ ट्राई टू थिंक, मतलब अभी कॉपी पेन होगा ना तुम्हारे पास, हाँ कॉपी पेन लेके बैठा करो. ठीक है? क्लास में. हाँ तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि अगर कोई भी एक यही वाला सैम्पल एग्जाम्पल से स्टार्ट करो और देखो कि लेट्स से इफ यू आर अराइविंग एट अ मिड गाय, आर यू एबल टू टेक द डिसीजन वेदर टू मूव लेफ्ट और वेदर टू मूव राइट. बस इतना पूछो अपने आप से. ठीक है? प्लीज टेक 2 minutes टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. ठीक है? हाँ I'll be back in 2 minutes. Yes. Uh, So, mhm. Yeah, go ahead. yeah go ahead Aravi so what I was thinking, like, we do the same thing we did before, Hmm. but instead of we doing like if v of the middle is equal to x, we can do like if v of middle is equal to true or Hmm. t. Hmm. हाँ, correct. मतलब there are two only possibilities, Um, right, for a V of mid. yeah, Either it can be yeah true so or it can be false. So basically, yeah let's say if it is false, then what should we do?
then you just go to the right. करेक्ट बिकॉज इफ देर इज हाँ Yeah. करेक्ट करेक्ट बेसिकली अगर जैसे मान लो कि ये मिड है, इफ दिस इज फॉल्स इट एक्चुअली मीन्स कि यहाँ पे तो सारे लोग फॉल्स ही होंगे राइट, so this part is actually Yeah. useless. You should move right, correct. But what should we do when we get a true? What should we do in that case? Go to the left. Go to the left, but there can be also a possibility na कि this true is also an answer. Then how to handle that? देखो So मान लो check कि if the your left mid one is is false or not. that's correct, that's good. बेसिकली इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम लोग। वैसे तुम लोग का लॉजिक सही है, देखो बेसिकली विल अगेन डू बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे करते हैं वो तो हमें पता ही है ना, ट्रेडिशनल वे वही है कि वी फर्स्ट क्रिएट आर रेंज, तो लेट्स से रेंज इज द होल थिंग इन स्टार्टिंग, करेक्ट। नाउ आई विल फाइंड द मिडिल Yeah. एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट इज व्हाट, जल्दी बताओ। False. 4. So Mhm. 4, sorry, 4. Why 4? So 7 divided by 7 divided by 2, 3. 3.5, Oh and sorry, 3.5 floor value is 3. 3. So middle element is this guy, right? Middle element is Yeah. this. If middle element is false, what should we do? Go to the right. Correct, move right. And move right means L is equal to mid plus 1, correct? Because now this will become my range, है ना? Yeah. Correct. Now this is my range, right? So let me fix this. Now again I will do the same thing. First let's again find out what is mid. So mid value अभी क्या होगा? अभी क्या होगा mid value? 5. करेक्ट 5। अभी देखो क्या होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली इफ मिड वैल्यू इज ट्रू, है ना, तो व्हाट आई शुड डू, मतलब इन टर्म्स ऑफ मूविंग आई शुड मूव लेफ्ट राइट Yeah. Yeah. एंड आर But विल if बी the- मिड माइनस 1। बट आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि ये ट्रू भी तो वैलिड आंसर हो सकता है ना, इट कैन ऑल्सो बी अ वैलिड आंसर। सो फॉर दैट Yeah. you can do two things. First is that you suggested कि यार let's check with just the left guy. If the left, Yeah, if exactly. just the left guy is false, it means this is the answer. Yeah. If it is Yeah. true, it means you are moving in right direction. मतलब you are moving in Right. correct direction, है ना? Yeah. But instead of doing that, what I'm suggesting कि let's create a okay. answer variable, ठीक है? हाँ. अभी देखो मैं क्या करूँगा। अब ये आंसर वेरिएबल क्या करेगा ना कि whenever I find any true, है ना, बिफोर मूविंग समवेयर और आफ्टर मूविंग, चलो ठीक है, मूव करने के बाद भी I'll do one more thing. The thing is I'll update my answer to that particular Yeah. index. Updating answer to mid. अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो बेसिकली अभी मेरा आंसर जो है वो ये हो गया, ठीक है। हाँ. अब मुझे ये पता है ना कि या तो ये आंसर हो सकता है, लाइक 5 कैन बी आंसर और 5 कैन नॉट बी आंसर, राइट। Right. If 5 is the answer, then I am updating my answer. This is correct. This is correct. Because I am Yeah. not gonna find any true in the left region now. Correct? If Right. 5 is actually Correct. indeed the answer. But let's say 5 is not the answer. Let's say if I am standing here. Let's say in some case I was standing here. Okay. Let's say if I am standing here and this is my mid. Let's say. And I know that this is not the answer, right? ये first true थोड़ी है. But still I'll update my answer to this 6 and then what I'll do? I'll say move left, ठीक है। Left. अब जब हम ये लेफ्ट मूव कर गए फिर हम क्या करेंगे, मिड फाइंड आउट करेंगे, लेट्स से दिस इज द मिड, देन ही विल से मूव राइट, फिर हम फिर से ये ट्रू पे आएंगे, मतलब कहने का ये मतलब है जब ये ट्रू पे आएंगे तो फिर से हम आंसर को अपडेट कर देंगे विद 5। Yeah. कहने का ये मतलब है इवेंचुअली you will somehow move to the correct position. That's the point. Correct. Because तुम क्या मेक श्योर कर रहे हो एवरी टाइम कि when you got a false, ठीक है, you are making sure कि हाँ the answer will lie in right region for sure, है ना। Right. And let's say whenever you are getting a true, what you are saying let's update our answer as well, because we don't know, right, whether this guy can also be the answer, right? So basically, Yeah. let's say if this is that particular index, so what I'm saying कि ठीक है, let's update answer to that particular index and let's move left. अब मान लो कि इन फ्यूचर यहाँ पे ट्रू है, तो इवेंचुअली ऐसे मूव करते करते ना यू विल गेट दिस फर्स्ट ट्रू फॉर श्योर, मतलब इस पे तुम आ ही जाओगे, ठीक है ना। इवेंचुअली बाइनरी सर्च विल इवेंचुअली गिव यू करेक्ट आंसर, so you don't need to worry about कि why we are updating answer every time, because देखो तुम we are taking decision in such a way कि we will reach the correct answer, right?
तो हम इवेंचुअली Right. करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। तो दैट्स वाई एट लास्ट जब भी आंसर मतलब आंसर अपडेट होगा ना, तो वो करेक्ट वैल्यू पे ही अपडेट होगा। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि यार प्रीवियस एलिमेंट चेक कर लेते हैं या फिर आगे वाला है, ऐसा कुछ करने से अच्छा है whenever you find a true, update your answer every time, आंख बंद करके, Every time, yeah. right? That's what you need to do. So Correct. let's try out one more example. The example is Mhm. the example can be false, 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 then true, true, true. Okay, and this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yeah, देखो देखो ध्यान से। तो आंसर Okay. वेरिएबल बना लेंगे एक, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द फर्स्ट ट्रू। हाँ अब क्या करेंगे, बाइनरी सर्च रन करेंगे। सम हाँ कोई ज्वाइन हुआ क्या जस्ट? Yeah, sorry, I lost my network connection again. I व्हाई don't know. एवरी टाइम इट हैपेंस कि आरिनी हैज इंटरनेट प्रॉब्लम एंड आरो इज I नॉट don't know. I हैव। tried calling the company from my laptop, it's not working. ओके, नो वरीज। तो बेसिकली हम लोग बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे, राइट? सो दिस इज एल, Huh. दिस इज आर। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड मिड, है ना? Right. मिड इज एल प्लस हाँ. आर बाई टू, क्या हो जाएगा मिड? 3. 3। 3, yeah. एंड व्हाट इज द वैल्यू एट 3? फॉल्स। तो फॉल्स क्या बोलेगा, यू शुड मूव Right. राइट, करेक्ट। तो मूविंग राइट, एल, अब मूविंग राइट मीन्स एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन, करेक्ट? Yeah. अब मेरा एल जो है वो ये हो गया। अब एट द नेक्स्ट आइट्रेशन, ये फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, सेकंड आइट्रेशन में अगेन आई विल डू द सेम थिंग, है ना? तो मिड क्या हो जाएगा बताओ? Second iteration. 5. हाँ, बस एल प्लस आर बाई टू ही तो करना है। मिड क्या होता है, एल प्लस आर बाई टू। Oh, तो एल का हाँ, वैल्यू देखो, five. आर का वैल्यू देखो, और इनका बीच का वैल्यू मतलब निकाल लो, 5 हो जाएगा, राइट? अब देखो 5 पे क्या वैल्यू है, ट्रू। तो 5 क्या बोलेगा, ये मतलब ये बंदा क्या बोलेगा कि फर्स्ट अपडेट योर आंसर विथ 5, मतलब माय वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू है ना, अपडेट आंसर। हाँ. आफ्टर अपडेटिंग आंसर यू शुड मूव लेफ्ट, एंड मूविंग Left, लेफ्ट yeah. मीन्स आर इज इक्वल टू मिड माइनस वन। अब हाँ. मूविंग लेफ्ट हाँ. मतलब ये रेंज था हमारा अभी, तो मूविंग लेफ्ट मतलब ये हो गया, तो आर जो है वो मिड माइनस वन हो गया, मतलब एल और आर दोनों एक ही जगह पे आ गए, राइट? हाँ. Right. यहाँ से आर हटा दो। अब बताओ थर्ड आइट्रेशन में मिड क्या है, एल और आर सेम ही है, 4 4, तो मिड भी 4 ही रहेगा, हाँ. 4. करेक्ट? तो मिड इज 4, इट इज ट्रू, इट विल से अपडेट योर आंसर। तो आई अगेन अपडेट माई आंसर। देखो पहले मैंने 5 पे आंसर किया था, अब देखो इवेंचुअली मैं करेक्ट आंसर पे आ गया, राइट? हाँ. क्योंकि एक्चुअली करेक्ट आंसर था मेरा। तो इवेंचुअली तुम्हारा Correct. आंसर जो है वो अपडेट हो ही जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि जब भी तुम्हें ट्रू मिले तुम अपडेट करते जाओ आंसर, एंड देन यू शुड हाँ. मूव लेफ्ट। तो अब लेफ्ट मूव करोगे तो रेंज जो है एम्प्टी हो जाएगा, और देन यू नीड टू स्टॉप द बाइनरी सर्च, राइट? हाँ. क्योंकि अभी ये रेंज है, एल और आर जो है वो दोनों 4 Yeah. हैं। अब लेफ्ट मूव करना मतलब क्या होता है, आर इज इक्वल टू मिड माइनस वन। Right. तो मिड भी अभी 4 ही है, राइट? दिस इज मिड इज ऑल्सो 4। तो आर क्या हो Yeah. जाएगा, 3, और एल रह जाएगा 4। तो ये वैलिड रेंज नहीं हुई, है ना? एल इज ग्रेटर देन आर, so there you should Correct. break. So that's how you will get your correct answer for sure, है ना? Answer is 4. हाँ. Right. Got the point? Yeah. ठीक है, तो लेट्स क्विकली इम्प्लीमेंट इट एज वेल, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली Yeah. जो प्रॉब्लम है फॉल्स ट्रू वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च की। आगे हम जितने भी Oh. प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो इवेंचुअली इस पे रिड्यूस होते हैं, ठीक है? हाँ. Oh. आगे हम जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे वो पहले इवेंचुअली इसी पे रिड्यूस होंगे, उसके बाद हमें पता है कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ट्रू, करेक्ट? Correct. So let's quickly implement it as well. So for that, I'll say when false false true 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 dot cpp. ठीक है? अभी what I need to do is, let's say we have a string s, ठीक है? Okay. Huh. Now s dot size, and now we need to run binary search, right? First of all, to run binary search, we need to, let's create an answer variable. Answer variable पे अभी by default we are doing -1. -1 actually Right. means कि it is the default value. Let's say in some case ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हारा जो string है उसमें से false ही false है, true है ही नहीं। So in this case you should return -1 because true doesn't exist, right? Oh. ठीक है? So the same thing, L is 0, R is n-1. I'll run binary search while L is less than equal to R. ठीक है? अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है।
Mid क्या हो जाएगा? L plus R by 2. If S of mid is comparable with false, right? If it is false, what I should do? Move right, है ना? Move right. So moving right means L is equal to mid plus 1. That's it. Right. Else, if it is true, what I should do? I should update my answer, है ना? If it is true, Yeah. I should update my answer plus I should move left. So moving left means R is equal to mid minus 1. And at last, I should just print this answer. Any doubt? No. No. So let's give some input. चलो कोई input बताओ. Give any input as a string. False. False. How many false should we have? कितने? 4, 5, कितने? 6. 6. Yeah. And then? Then true. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then true, 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 true. ठीक है? Yeah. So the answer should be 6, right? Index wise. 0 Hmm. index wise. We are getting 6. Yeah. ठीक है, कुछ भी डालोगे, लेट्स से कि अगर से false 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 डाल देंगे तो आंसर विल बी -1. ठीक है? Yeah. So what is the time complexity here to find this first true? 0. No. Of. हाँ, डरो मत, सीधा बताओ ना जो लग रहा है. Log n. करेक्ट, log n, क्योंकि हम लोग बाइनरी सर्च ही तो कर रहे हैं, इसमें इतना सोचना क्या था, Yeah. राइट? वी आर डूइंग बाइनरी सर्च, राइट? साइज Yeah. सेम ही चीज़ तो है, और पहले भी तो हमने एरे पे लगाया था, अभी स्ट्रिंग पे लगाया है, तो उसमें चेंज क्या है? Yeah. ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आइट्रेशन जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई हैवी ऑपरेशन थोड़ी कर रहे हैं. वी आर डूइंग द सेम Right. थिंग, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी सेम एज बाइनरी सर्च, व्हिच इज ऑर्डर ऑफ log n. दैट्स एक्चुअली अ वेरी ह्यूज थिंग, राइट? वेरी ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन. की लीनियर सर्च से तो हम एक एक करके कर रहे थे, which is order of n, but Yeah, using binary big search we can solve this problem. अब तुम्हें एक चीज समझ आई होगी कि बाइनरी सर्च इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सॉर्टेड एरेज, राइट? बिकॉज ये सॉर्टेड Correct. थोड़ी था, मतलब काइंड ऑफ सॉर्टेड भी इसको बोल सकते हो, बट एक तरह से अलग पैटर्न है ना ये. पहले कुछ फॉल्स आ रहे हैं, उसके बाद ट्रू आ रहे हैं, एंड वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ट्रू, राइट? Right. ओके. अब मैंने तुम्हें ये बोला था ना कि ये वाला जो प्रॉब्लम है यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स इसी पे रिड्यूस होते हैं, राइट? हाँ. Right. So now let's try to solve some more problems जो कि इस पे ही reduce होंगे, ठीक है, eventually. Let's see. Okay. Let's try to solve some problems. Problem है basically now हम दो famous terms के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होते हैं upper bound, या I guess तुमने स्टील वाले वीडियो में सुना होगा, I guess. I don't. I'm Yeah, not- somewhat. upper bound and lower bound. We need to now we will be implementing them, ठीक है? Okay. What is upper bound and lower bound? तो कोई भी एक को implement करके देखते हैं तो दूसरा वाला अपने आप ही मतलब हमें आ जाएगा समझ में. Let's implement lower bound, ठीक है? अब उसके लिए पहले समझना पड़ेगा what is lower bound, right? हाँ. Lower bound क्या होता है कि lower bound let's say कि तो lower bound is defined for a particular value, ठीक है? तो lower bound of x क्या होगा? First value in the array which is Less which than. is greater than or equal to x. लेस देन x थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि अगर सॉर्टेड एरे है तो फिर तो वो फर्स्ट वैल्यू हो गया सॉर्टेड एरे का, राइट? विच इज हाँ. Yeah. लेस देन x. फिर प्रॉब्लम में हाँ कोई प्रॉब्लम में कुछ बचेगा नहीं ना दिमाग लगाने वाला. Right. बेसिकली लोअर बाउंड क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का, कि व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू इन एरे, और यू कैन से द लेफ्ट मोस्ट, मतलब इसको लेफ्ट मोस्ट भी बोल सकते हो. Right. लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स इन एरे विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, नॉट इंडेक्स द वैल्यू, ठीक है? You need to tell me what is the index, मतलब at which index the value is like. For example, देखो, if we have sorted array, so in sorted array only we will be talking about these things, ठीक है? Lower bound, upper bound. Sorted array है तो for example कोई भी sorted array ले लो, 1, 3, 8, 10, 19, 15, not 15, 20, 23 ऐसा करके. If I ask you, तो ये basically indexes हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? If I ask you what is lower bound of 5, what will be the answer? देखो यहाँ पे definition देखो एक बार ऊपर. Lower bound is the first value in array which is greater than or equal to x. तो ये x के लिए defined है तो lower bound of 5 क्या होगा? What is the first value which is greater than or equal to 5? Yeah. What is the first value in this array? 6. So it will be 6, right? नहीं 6 नहीं, मतलब 6 is not existing in the array. No, I'm talking about value, 8. not index. 8. 8. 8.
हाँ करेक्ट, देखो इंडेक्स भी अगर कोई बोलेगा तो फिर उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, ये जो वैल्यू है तुम बोल दोगे x+1 है आंसर, ऐसा थोड़ी है. हाँ, They are 8. asking about the value in the array 8, right? Yeah. But they will ask you what is the index, मतलब what is the index, what is the position of that 8, so you should tell me 2. The answer for lower bound of 5 will become 2. Why? Because at index 2 we are having the first value which is greater than or equal to 5. Got the point? Yeah. अब ये Yeah. बताओ what is lower bound of 20. But lower bound of 20 is 23. फिर से एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या है. First value in array which is greater than or equal to x. Oh, 20. करेक्ट, और 20 किस इंडेक्स पे? 25. 5, तो द आंसर विल बी 5. समझ आ गई बात? Right. Okay, so that's what you need to do in this problem. मतलब you need to implement lower bound. Lower bound मतलब basically you will be given a sorted array, ठीक है, and I will ask you what is lower bound of x. You need to tell me what is the index of lower bound of x. समझ गए? Yeah. तो गिवन ये सॉर्टेड एरे ही रहेगा, तो ऑब्वियसली अब लीनियर सर्च तो देखो बार बार ब्रूट फोर्स कर ही सकते हैं हम लोग कि एक एक करके चेक करते जाओ क्या ये वैल्यू बड़ी है क्या x से. इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन x देन जस्ट ब्रेक दिस, राइट? This is what linear Correct. search will be, right? One by one checking from starting from left, one by one checking whether या ये वैल्यू बड़ी है क्या x से, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ. क्या ये वैल्यू बड़ी है वैल्यू बड़ी है x से, तो फिर बस दिस इज आंसर, राइट? This is what lower linear search will be, but we are not interested in linear search anymore. I want something optimized, है ना? तो optimized मतलब indirectly I'm saying कि what is the binary search approach for this, ठीक है? बेसिकली यू नीड टू थिंक अबाउट दिस नाउ कि मतलब इसको सोच के देखो कि लोअर बाउंड ऑफ 5 मान लो निकालना है, हाउ विल यू अप्लाई बाइनरी सर्च? वही सेम लॉजिक, वेद यू फॉर एवरी आइट्रेशन you just need to make sure whether you are able to decide or not कि whether to move left or Yeah. whether to move right, ठीक है? एंड अगेन यू कैन डू द सेम थिंग कि वो आंसर वेरिएबल ऊपर से बना लो, मतलब एक आंसर वेरिएबल रखेंगे और उसी को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है? Yeah. तो नाउ प्लीज थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम फॉर 2 minutes, ठीक है? Huh. ओके.
Yes. Um, so I feel like it would be the same concept, but Hmm. instead of what was I gonna say? Instead of looking at just like you would still find the middle and everything Hmm. and find which value is greater than or equal to the middle. So basically again the same thing, right? कि middle element हम Yeah. देखेंगे. Yeah. For example, let's try to find out. Let's try to process. ठीक है. तो lower bound 5 का निकालना है. The same thing. L is this. R is this. Middle element क्या हुआ बताओ? 3, right? 3. Which is having value 10. अब ये 10 क्या बोलेगा? Since ये जो 10 है वो greater than or equal to 5 है तो it is a Yeah. valid guy, right? Yeah. Valid option Yeah. है. I should update my answer, right? Yeah. I should update my answer. देखो इसको तो ना तुम सेम सोच सकते हो जो अभी ट्रू फॉल्स वाला चीज़ किया था ना, इसको बिल्कुल उससे रिलेट कर सकते हैं. देखो कैसे. हमें पता है हमें पता है कि कोई वैल्यू मतलब हमें लोअर बाउंड निकालना है, राइट? हाँ. तो तुम ऐसे सोचो कि अगर कोई वैल्यू लेस देन दिस एक्स है, इट मीन्स इट इज फॉल्स. और अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, इट मीन्स इट इज ट्रू. तुम ऐसे सोचो अभी क्या होगा. ये जो चीज़ है वो ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फिर ये ट्रू है और बाकी सारे ट्रू होंगे. एंड दिस इज द सेम थिंग, राइट? यू नीड टू फाइंड given an array of false, some false and then trues, you need to find the first true, isn't it? सेम Yeah. चीज़ ही तो है. तुम्हें एक्चुअली में सेम ही चीज़ करनी है जो तुमने यहाँ पे की थी, Yeah, just name. राइट? हमने क्या Yeah. किया, इस प्रॉब्लम को इसी से रिलेट कर दिया है ना. हमने वी फाइंड आउट अ वे टू मैप द एलिमेंट्स टू ट्रू एंड फॉल्स, राइट? और वो वे ये है. हाँ. वे इज कि हमें पता है ना कि लोअर बाउंड क्या होता है. लोअर बाउंड एक्चुअली ये होता है कि व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू इन array which is greater than equal to x. Basically it is Yeah. asking you the same thing. First true, देखो first value लिखा है ना, it is asking you the same thing. हाँ. What is the first position of true? और तुम true कैसे डिसाइड करोगे? True are all those elements which is greater than or equal to x, right? तो ये सारे Yeah. elements true हो गए. और तुम्हें पता है कि अगर ये ट्रू हो गया मतलब इफ 8 इज ट्रू तो एवरीबडी एल्स शुड बी ट्रू एज वेल. व्हाई? क्योंकि ये लोग Yeah. उससे बड़े हैं ना 8 से, Right. तो दे शुड बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन योर टारगेट, है ना, जब जो एक्स है. तुम्हें पता है कि ये जो एरे है वो सेम चीज़ फॉलो कर रहा है, सेम ट्रेंड कि फर्स्ट देयर विल बी सम फॉल्स एंड देन देयर विल बी ट्रू टिल द एंड. एंड नाउ यू द प्रॉब्लम इज सेम. It actually tells you to find out what is the first value of true, correct? Yeah. And we can apply the same concept. Got the point? Yeah. Yes. अभी इसको इम्प्लीमेंट करने का देखो ट्रिक बताते हैं. ट्रिक ये है कि फर्स्ट टेल मी दिस कि क्या मुझे शुड आई create another array of true and false for every value? Should I create, or I can directly check while traversing the middle guy whether it is true or false? I think you should be able to directly check, right? Correct. Because Yeah. if I create another new array, then obviously my time complexity will become order of n, right? Because I'm हाँ. creating a new array and assigning value to each and everybody. Obviously it is order of n. तो इससे अच्छा तो linear search कर लेते हैं, right? What's the use of हाँ. this? हाँ. That's why we will not be creating, we will not be mapping each value to false and true starting में, Yeah. क्योंकि हमें पता है कि we can do it afterwards as well, because this is the simple rule, right? To check whether a value is true or false. तो अब देखो हम यही करेंगे. हम क्या करेंगे? Let's start the process. देखो, this is L, this is R, this is your range. हाँ. Middle element बताओ. 3. Correct. 10. Now tell me middle element का value क्या है? 10. 10. 10. Is this a true instance or false instance? अब हम ये रूल को देखेंगे. क्या ये true है, false है? It is. Wait. X is 5. तो Oh, ये yeah. क्या हुआ? True. True, correct. अब ट्रू है तो हमें क्या करना चाहिए? अपडेट माई आंसर, राइट? अपडेट माई आंसर टू दिस गाय Yeah. which is 3. And I should move left or right? बताओ.
If it's true, you move it. हाँ, अरे अगर ये ट्रू है तो बाकी सारे तो ट्रू ही है ना, तो हमें फर्स्ट ट्रू चाहिए। फर्स्ट ट्रू कहाँ मिलेगा? Oh, like that. Yeah, Left. yeah, yeah. So you have to मूव go to the लेफ्ट। left. मूविंग लेफ्ट का मतलब क्या होता है? आर इज इक्वल टू मिड माइनस वन। Mid minus one. ठीक है, तो अभी रेंज क्या हो जाएगा? अब रेंज क्या हो जाएगा? दिस वॉज मिड, तो आर It विल will बी be मिड माइनस this वन, minus दिस one. इज आर। So It it will will be be 0 and 2. करेक्ट, गुड। 0 and 2. Now again the same thing. What is the mid value? 1. 1. What is the 1. value at mid? 3. Is it a true or false? It's 3. No, So it's true or false. X is 5. तो ये इन दोनों में से कौन सा so रूल it will फॉलो be हो रहा है? it will be false. False, correct. So what should we do? Mhm. Move right, Move right. and L will become mid plus 1. अभी 1. L will become mid plus 1, तो L और R दोनों यहाँ पे आ गए, हाँ. right? And then Huh. one more time, mid will be 2, value is 8, it is true, I'll update my answer to 2, and then I'll move somewhere, but उसके बाद Yeah. प्रोसेस खत्म हो जाएगा। बेसिकली Yeah. आई Just गॉट माई yeah. आंसर विच इज 2, करेक्ट। और तुम Correct. देख सकते हो कि वाइल आस्किंग द मिडिल गाय ओनली आई एम चेकिंग व्हाट इज इट्स मैपिंग। आई Yeah. डिड नॉट Right. क्रिएट द होल मैपिंग, वो चार्ट पूरा मैंने बनाया नहीं। वाइल Right. आस्किंग द मिडिल गाय आई एम ओनली आस्किंग व्हाट इट्स मतलब वर्डिक्ट, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। व्हाट द पॉइंट? Correct. तो इसको भी इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है। देखो, मतलब इसको भी इम्प्लीमेंट करना सेम इसी की तरह है। देखो, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। लेट्स से लोअर बाउंड डॉट cpp, तो इसमें वो लिख लेते हैं। नाउ वी नीड टू डू द सेम थिंग। तो फर्स्ट लेट मी क्रिएट दिस एरे वेरी क्विकली। तो ये एरे बना लेते हैं, विक्टर इंट वी 1 3 8 10 19 20 23, ठीक है। हाँ. इंट एन इज वी डॉट साइज, लेट्स से x is 5, ठीक है। we need to find the lower bound of x, है ना। Huh. Right. So basically the same thing, we can apply binary search here. So n minus 1. Now while l is less than equal to r, what I'll do, I'll check this mid guy, right? You'll check if yeah. The first step is find the middle guy, but वही सेम प्रोसेस होती है, mid is l plus r by 2. Huh. अब हमें चेक करना है वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट चेक करने के लिए देखो, वर्डिक्ट चेक करना है ना वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। हाँ. तो इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल कि यू क्रिएट अनदर फंक्शन, ठीक है, टू चेक Oh, अ पर्टिकुलर मिड वैल्यू वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। okay. Okay. Yeah. ठीक है, अभी व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन कि टेल मी whether this value, whether this index is true index or false index, ठीक है। So if Right. check of mid is 1, or you can directly say if check of mid is true, it means it is true, right? हाँ. Yeah. And if it is true, what we should do, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट we need to update the answer, right? So let's Yeah, also so- create the answer variable and we need to update the answer. तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पे, mid, and then I should move left, or moving left means r is equal to mid minus 1. Mid minus 1. Else what I should do in case of false, I should just move right and L will become mid plus. Else you just do L as mid plus. Now the task is to implement this check function, right? Implementing this check function is very easy. We also need to pass vector as well because we need the values, है ना, to check Huh. whether a particular index is true or false. We first need to check its value, right? Yeah, yeah. That's why I'm passing this v, ठीक है। अब देखो Okay. क्या होगा यहाँ पे, you need to take this v as a reference. ये चीज़ पता है तुम्हें क्या होता है ये? It's the address of it. No, it is actually Or we use it by reference or हाँ something. हाँ हाँ, it is actually taking Reference. as reference. It actually means कि when you write this ना ampersand, so whenever this function, whenever the main function will call check, ठीक है, it will not मतलब ये check जो है ना ये v का direct access ले लेगा। it will मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये अपना अलग से एक वेक्टर बना के उसमें सारी वैल्यूज कॉपी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। Right. ये डायरेक्टली एक्सेस ले लेता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि इफ यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इनसाइड योर फंक्शन, तो ऑलवेज पास वेरिएबल्स एज रेफरेंस, ऑलवेज Right. पास योर Yeah.
एरेज और कंटेनर्स एज अ रेफरेंस, ठीक है। Okay. अदरवाइज क्या होगा, वेन एवर यू कॉल दिस फंक्शन, एवरी टाइम इट विल क्रिएट अ न्यू कॉपी एंड एवरी टाइम ये कॉपी होगा, मतलब पूरा का पूरा, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, Yeah. ठीक है। हाँ दैट्स व्हाई यू ऑलवेज नीड टू पास दिस एज रेफरेंस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ Okay. तो नाउ कैसे चेक करेंगे किसी वैल्यू को, तो बेसिकली फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ऑफ मिड। नाउ द सेम थिंग, ये चीज, Huh. if value is less than x, so we also need to pass x as well because we need its value, right? Let's pass Right. x as well, ठीक है, यहाँ पे भी x पास करना। तो now we need to check whether it is true or false, तो अगर value less than x है, right, हाँ. तो ये false है, हाँ और false means zero, तो return zero। true मतलब होता है one, false मतलब होता है zero, and if otherwise we should return one, right, Right. क्योंकि समझ गए। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिर्फ एक चेक फंक्शन एक और इंट्रोड्यूस किया है, राइट, Right. बिकॉज ये चेक फंक्शन हमारी हेल्प करेगा टू मैप दिस प्रॉब्लम टू दैट ट्रू फॉल्स वाली प्रॉब्लम को, राइट। इट विल हेल्प हाँ अस टू Correct. रिड्यूस इट टू फॉल्स 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 ट्रू 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 वाली प्रॉब्लम को, ठीक है। बिकॉज नाउ एवरी इंडेक्स जो हाँ है उसमें हम ट्रू और फॉल्स समझ सकते हैं कि वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स इंस्टेंस, और बेस्ड ऑन दैट correct. we can decide whether to move left or whether to move right, right. This is actually what moving left and it is actually moving right, समझ गए ना। Huh. So let's run this quickly just to see what is the answer that we are getting. Oh, we need to print answer as well. So let's see, we are getting 2 and which is the correct answer, right? 2 is the index. Let's try for some more input. For example, if I give 18, it should be this index, right? It is 0 1 2 3 4, so answer should be 4, so we are getting 4, right. If I write 10, Right. if I write 10, what should be the answer? 10 would be 10. 10. 10 would be 10, but the answer will be the index 0 1 2 Oh 3 yeah, so that'll 4, be 3. yeah 3. 3, right, so we are getting 3. Basically we are able to implement lower bound. What will be the time complexity by looking at this code, क्या time complexity है इसकी बताओ। बेसिकली देखो ध्यान से, Again. ध्यान से देखो क्या होगा, this Four loop will for run for log n time, correct, Yeah, correct. and inside this loop we are calling a function which is check, है ना। हाँ तो फॉर एवरी आइट्रेशन वी आर कॉलिंग चेक, ठीक है, तो वी आर हैविंग yeah log n Oh. iteration into time complexity of check. This is what Yeah. time complexity of. Now basically Yeah. in this case check is not doing some heavy operation, it is just checking whether a value is less than or equal to, है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया इसका complexity, है ना, इस चीज़ का। दैट्स व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल इज लॉगरिथमिक ऑफ n, समझ गए। Huh. Basically this is what your time complexity of binary search, log n times time complexity of check function. Now in some cases जब हम थोड़े difficult problems डील करेंगे तो ये check function भी ना कुछ थोड़ा heavy हो सकता है। let's say it is iterating over something, तो यहाँ पे n भी हो सकता है कि order of n ले रहा है check, still तुम्हारा जो overall complexity होगा वो n log n होगा, which is very good, ठीक है। Yeah. right now check function का ज़्यादा heavy task नहीं था, it just need to check whether this value is greater than or equal to something, तो वो order of 1 है। that's why the total time complexity of implementing lower bound is or log n, समझ गए। हाँ. लोअर बाउंड समझ में आ गया। लोअर बाउंड हाँ, इज हाँ. द फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ये काफ़ी काम आता है, पता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये हम लोग अभी प्रॉब्लम करने वाले हैं कैसे काम आता है। तो इम्प्लीमेंट करना समझ आया कि नहीं, क्योंकि लोअर बाउंड अपर बाउंड के डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस में जो कि तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वो फंक्शन देखो मैं Oh. बताता हूँ क्या होता है। okay बेसिकली इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस, है ना, हाँ इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस तुम डायरेक्टली मतलब लोअर बाउंड को ऐसे भी लिख सकते थे। लोअर बाउंड का मतलब एस में ही फंक्शन होता है। द फंक्शन जो वो ऐसे दिखता है, देखो, लोअर अंडरस्कोर बाउंड बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड एंड एक्स, Oh yeah, I remember seeing this. राइट। yeah ये चीज़ yeah बताता है कि किस रेंज में तुम्हें ढूंढना है, राइट, व्हाट इज योर रेंज। हाँ तो रेंज तो अभी पूरी है, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर विच यू नीड टू फाइंड लोअर बाउंड, तो देखो अब यहाँ पे। correct तो बेसिकली बट द पॉइंट इज इट रिटर्न्स एन आइट्रेटर। आइट्रेटर पता होगा तुम लोग को थोड़ा बहुत, आइट्रेटर क्या होता है, राइट, है ना। ये रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स आइट्रेटर। आइट्रेटर, Yeah. आइट्रेटर मतलब क्या होता है, एनीबडी। um, जैसे देखो अगर तुम्हारा वेक्टर है, ठीक है,
आइट्रेटर तुम ऐसे समझ सकते हो कि इट इज काइंड ऑफ एन एड्रेस, नॉट एग्जैक्टली एड्रेस बट काइंड ऑफ एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइट्रेटर है ना, ये वी डॉट बिगिन होता है, हाँ मतलब Finds the address of element, right? हाँ काइंड Or ऑफ। something. या और ये जो होता है मतलब लास्ट एलिमेंट के बाद वाला जो स्पेस होता है ना, ये होता है वी डॉट एंड। यू नीड टू मेक मतलब ऑब्वियसली ये बात ध्यान रखना कि जो वी डॉट एंड है ना, वो एक लास्ट एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट होता है, मतलब जो एक्चुअली में हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, हाँ टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस गाय यू शुड डू वी डॉट एंड -1। ठीक है ना, Right. एंड इन वाइल पासिंग दिस इन अ फंक्शन, तो ये ऑब्वियसली ऐसे पास होता है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा देना पड़ती है, दैट्स वाई वी डॉट एंड आया यहाँ पे। ठीक है, Right. हाँ रेंज का एक वैल्यू ज़्यादा। अभी आइट्रेटर क्या होता है, तो बेसिकली आइट्रेटर मतलब कुछ नहीं, एड्रेस ही मान सकते हो। तो यहाँ पे इसका कोई एक पर्टिकुलर आइट्रेटर होगा, है ना। तो बेसिकली जो लोअर बाउंड है ना, ये आइट्रेटर रिटर्न करता है। तो अगर हम लोग अगर सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट करने का कोशिश करें ना लोअर बाउंड को, लोअर बाउंड वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड एक्स, ठीक है, और एक्स को दे दो कुछ भी 5 दे दो, तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर ये वैल्यू आना चाहिए था, राइट। मतलब हाँ लेट्स सी क्या होता है। देखो बहुत बड़ा सा एरर आ गया। ये एरर इसलिए आया क्योंकि यू कैन नॉट प्रिंट आइट्रेटर्स, ठीक है, ये एक रूल है, मान सकते हो, है ना। हम ओके आइट्रेटर्स को प्रिंट नहीं कर सकते। प्रिंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सी आउट ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर आइट्रेटर्स, ऐसा सोच सकते हो। ओके इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू इंडेक्स निकालना है बेसिकली। तो अगर वी डॉट बिगिन 0 के इक्वल है और ये आइट्रेटर 0 1 2 3 के इक्वल है, तो बेसिकली द पॉइंट इज यू कैन सब्ट्रैक्ट आइट्रेटर्स इन वेक्टर्स। तुम जब आई टी करोगे ना, आई टी कुछ नहीं है, आई टी वी डॉट बिगिन प्लस 3 है। तो टू गेट दिस 3 यू कैन जस्ट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम वी डॉट बिगिन। तो अगर हम ये लिखेंगे ना यहाँ पे दिस आइट्रेटर माइनस वी डॉट बिगिन, अब हमें इंडेक्स मिल जाएगा, देखो मिल गया। हाँ. तो इसका ये मतलब है, तो मतलब तुम्हें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एस में लोअर बाउंड फंक्शन होता है ना, ये आइट्रेटर रिटर्न हाँ करता है। टू गेट द इंडेक्स यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम वी डॉट बिगिन, Okay. बस इतना चीज़ याद रखना है, समझ गए। हाँ. हाँ तो बेसिकली मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि लोअर बाउंड जो है ये ऑब्वियसली तुम्हारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है ऑलरेडी अवेलेबल, बट यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, बाय योर ओन। यू शुड नीड मतलब यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरनल वर्किंग ऑफ दिस लोअर बाउंड, ठीक है। Okay. या Yeah. ओके, नाउ सिमिलरली जो लोअर जैसे लोअर बाउंड होता है, वैसे एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। नाउ आई एम हाँ नॉट गोना इम्प्लीमेंट अपर बाउंड। अपर बाउंड की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अपर बाउंड क्या होता है कि फॉर अ सॉर्टेड एरे, और है ना, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट वैल्यू विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स, दैट्स इट। लोअर बाउंड में क्या था, Greater than or equal. करेक्ट, greater than लोअर बाउंड में क्या था कि व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो बस यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ना होके ग्रेटर देन है, समझ गए। दैट्स व्हाई हाँ. इट इज अपर बाउंड। अपर का थोड़ा सा मतलब ही समझ में आ रहा होगा ना कि अपर बाउंड है, मतलब हाँ हाँ इट विल बी Yeah. अपर, ऑब्वियसली अपर देन इट, दैट्स व्हाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा ये, ठीक है। यस और लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो जैसे हाँ अपर बाउंड, जैसे लोअर बाउंड का ये फंक्शन है ना, वैसे अपर बाउंड का भी फंक्शन होता है, विच इज द सेम, मतलब ओके यहाँ पे बस अपर लिख दो, समझ गए। हाँ और सिमिलरली जैसे हमने लोअर बाउंड इंप्लीमेंट किया था यहाँ पे, वैसे हम अपर बाउंड भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ चेंज करना पड़ेगी यहाँ पे कि व्हेन इट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स देन यू शुड रिटर्न 0, है ना। यहाँ पे बस हाँ ये चीज़ करनी पड़ेगी इन केस ऑफ अपर बाउंड, क्योंकि अपर बाउंड में ट्रू कौन लोग होंगे, जब वो लोग स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है एक्स से, तभी वो लोग ट्रू होंगे। तो इफ इट इज करेक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स देन रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0, है ना। Correct. या तो जस्ट वेट अ मिनट, uh, wait. Move. Yeah. So basically, this is so while implementing upper bound. So let me just quickly do the same. So copy lower bound to upper bound dot cpp, और अपर बाउंड इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको लेस देन और इक्वल टू कर देना है, दैट्स इट, समझ गए। हाँ. हाँ तो ये हाँ. चीज़ यहाँ से हट जाएगा, है ना, सेम थिंग। हाँ Correct. एक्स में हमने 5 और 10 दो दो बार दे दिया है, तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो कि अगर 5 है, इफ एक्स इज 5, व्हाट शुड बी द अपर बाउंड, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू व्हिच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, 8. करेक्ट 8 8, दैट्स व्हाई आंसर इज 2 बिकॉज इट्स इंडेक्स, है ना। बट Hmm. या देखो चेंज कहाँ पे आएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट इफ एक्स इज 10,
लोअर बाउंड क्या होता है इस केस में? 10. 10 होता है, So राइट? सो इट इज 3, बट अपर बाउंड क्या होगा? 19. So 4. वेरी गुड। देखो अभी आंसर 4 आ रहा है। हाँ. गॉट द पॉइंट? हाँ ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है, Yeah. बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है, क्वेश्चंस करने में, ये दोनों चीज़। Oh. तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनल फंक्शंस भी हैं, तो हम Yeah. वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अगर हमें जल्दी करना है और वाइल इन अ कॉन्टेस्ट, वी वोंट बी इम्प्लीमेंटिंग देम फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव देयर प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, तो हम उन्हीं को यूज़ कर Correct. लेंगे। बस मतलब समझ में आना चाहिए दोनों का, ठीक है, अच्छे से। yes ओके